वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केयर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में आपका स्वागत है। दिस इज अ रीअपलोड इन केस यू वंडरिंग। कुछ घंटे पहले मैंने अपलोड किया था बट उसमें आवाज नहीं आ रही थी, देयर वाज नो वॉइस, सो हियर वी गो अगेन आई गेस। हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज ए वीडियो ऑन दिस आर्टिकल इन केस यू वर वंडरिंग, जहां पे अगर आपको सेक्टर्स चाहिए और स्टॉक्स चाहिए तो आप ये आर्टिकल देख पाओगे। इट्स ऑन investing.com एंड इफ यू रिक्वायर द लिंक यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट विद यू. And as always, not SEBI registered, purely for edu and info purposes only. So please treat this as such, not as investment advice. Now शुरुआत करते हैं quickly. I'll do it because it's almost 10 and we need to be mindful of that as well. हम लोग देखते हैं यहाँ पे वीकली पे अपोलो हॉस्पिटल्स वीकली चार्ट पे 50 एमए के आसपास आ रहा है. इट्स क्रॉसिंग RSI 50 ऑल्सो अप्रॉक्सिमेटली. दिस इज अ गुड साइन. आई फील अगर यहाँ तक आता है, then if I remember correctly, we've got a 6-7% upside. Acha, no, this is the 6% upside. This is the 10% upside. And here it's got around a 25% upside. You can see thoda conservatively liya hai. But that is the upside that we're seeing in Apollo hospitals, I would say. Obviously, risk hai, like any other trade. So we can keep that in mind. Maybe yahan pe ye region might be like a good SL area. Because again, it just shows that it's sort of been rejected. So you can keep that as per your risk appetite. नेक्स्ट अप एशियन पेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि 50 एम और 20 एम दोनों को क्रॉस किया है. दैट लुक्स गुड एज वेल. एंड इवन इन जनरल इफ वी जस्ट रिमूव द मूविंग एवरेजेस एज वेल, हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये रीजन को उसने होल्ड कर लिया, दैट मीन्स इट्स वेरी लाइकली टू रीटेस्ट दैट retest that ATH level as well. Plus अगर हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें, then generally at least from what I've seen, समर के आसपास people end up doing a lot of renovations and all. Plus Asian Paints ने from our contractor only I heard they've increased their prices, which means likely revenue थोड़ा सा शायद ऊपर की ओर आ सकता है. That might also mean that cyclical thing that we see with such stocks, we might see that happening this time as well. So वो भी एक है. नेक्स्ट अप वीव गॉट बजाज ऑटो. यहाँ पे देख सकते हैं आइडियल टाइम वुड हैव बीन टू बाय समवेयर अराउंड हियर 200 एमए के आसपास, बट दैट्स फाइन. 50 एमए अभी तोड़ा है. अगर यहाँ तक जाता है देन वी स्टिल हैव अ गुड healthy decent upside of around 10%, I'd say. देखते हैं कैसा जाता है. RSI is also around 60 and let's see if it actually breaks this sort of high. अभी double top था यहाँ पे. Let's see if it ends up being a triple top and let's see if it actually breaks that. Next up BPCL हम लोग देख सकते हैं 20 MA को क्रॉस किया है वीकली पर, और अगर डेली देखते हैं then we can see it's well above its 50 MA as well. Things are looking good. Now in terms of supports 373 के आसपास एक शायद हो सकता है. And in terms of overall where it might be headed, I would say पहला तो 200 MA वो क्रॉस करता है, I think. Then the road is clear, I would say till 420 430 or so वो देखा जाएगा. Next up, Coal India. Big stock, big company, finally above that 200 MA line after 7 long years. Last हम लोग ने देखा था अगस्त 2015 में. अभी कुछ महीनों में अगस्त 2022 हो जाएगा, तो 7 years के बाद we're seeing it holding above 200 MA and that's a very good sign. Clearly something's going right, something's going well. ये हम लोग ने पहले भी बात की थी कि how it's forming a bullish parallel channel and now it's also doing well overall. हम लोग देख सकते हैं this sort of past week has been well. ये वाला जो जोन है, it will obviously be a level to test, but then that's just how it is. Overall weekly basis pe we can see it's a good high close. And we can also see another thing, and that is कि पिछले हफ्ते में उसने 4.5% किया, which is another good sign. Next up Grasim. हम लोग देख सकते हैं 50 MA के ऊपर आया है, 20 MA के भी ऊपर आया है. now 6% up, another stock that is there on our list. Next up HDFC Bank. HDFC twins in general are looking good. मंडे को ऑब्वियसली मर्जर का न्यूज़ आया था, उसके वजह से काफ़ी ऊपर चला गया था. एंड आफ्टर दैट मर्जर का न्यूज़ प्राइस सॉर्ट ऑफ स्लिप्ड बैक. जैसे थे वैसे थे, वैसे हैं टाइप का सिचुएशन हो गया. एंड नाउ वी आर फाइनली सीइंग सम सपोर्ट, आई से, बिकॉज HDFC बैंक 1530 क्रॉस करता है, देन इट लुक्स गुड. HDFC as such is in general, I think it's got potential. मैंने इनफैक्ट बाय किया था. I have added to my position. I've mentioned it in my daily market analysis as well. So any of these top stocks ना basically निफ्टी, बैंक निफ्टी के, मैं इन सारी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस में ऑलवेज मेंशन करता हूँ. सो इट्स प्रूडेंट टू लुक एट दोज एज वेल इफ यू वांट टू ट्रैक दोज स्टॉक्स. नेक्स्ट अप ICICI बैंक, अनदर स्टॉक दैट वी स्पोकन अबाउट इन आवर डेली मार्केट एनालिसिस. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 50 MA और 20 MA के ऊपर आया है. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द रीजन व्हाई I am actually tracking this is not just moving averages. It's actually because fib extension है. Fib extension का हम लोग देख सकते हैं it's above that 741 level, has managed to hold above that line
और अगर हम लोग लाइन चार्ट देखते हैं, वी कैन सी इट्स बैंक स्मैक एट दैट लेवल सीधा. सो दैट ऑल्सो इंस्पायर्स अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन मी फॉर दिस स्टॉक. सो देखते हैं कैसा जाता है. इन केस यू आर वंडरिंग अबाउट फिब एक्सटेंशंस, then you can find more info. Just go on my latest video or go on any new video and you can see यहाँ पे आप देख पाओगे the first video in the watch list thing. Watch next thing is the one, and please avoid clicking on shit like this. It's just straight up bad. So remove कर लो इसको. You can't remove it obviously, this is my admin account, but I can, so you can always report it, and it always helps making YouTube a better place in general. बैक टू स्टॉक्स हम लोग देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा है नेक्स्ट, एंड वी कैन सी 50 के ऊपर है. अगेन आइडियल टाइम वुड हैव बीन समवेयर अराउंड हियर जस्ट लाइक बजाज ऑटो. बट लेट्स नॉट स्पीक इन आइडियल थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट नाउ. अभी हम लोग देख सकते हैं 3.7% ऊपर है, एंड आई थिंक इट्स गॉट अ गुड शॉट ओवरऑल. आई मीन 960 के आसपास शायद आ सकता है. व्हाट आई एम मोर क्यूरियस इज अबाउट कि क्या 1000 का लेवल वो कर पाएगा कि नहीं. बिकॉज ओवरऑल हियर वी कैन सी दिस वाज अ गुड पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एरिया टू एक्चुअली क्रॉस दैट लेवल. और हम लोग ने फिर डिप देखा इन जनरल मार्केट अक्टूबर के बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस हो गया, एंड नाउ वी आर सीइंग इट सॉर्ट ऑफ गेनिंग अगेन. सो लेट्स सी इफ इट्स एबल टू डू इट दिस टाइम, मे बी थर्ड टाइम्स द चार्म. नेक्स्ट अप SBI लाइफ हम लोग देख सकते हैं इट्स अप 4.2%, नाउ अबव 50 एम अबव 20 एम लुक्स गुड. हम लोग देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस था ओवरऑल, उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर पाया है. मे बी वील गेट अ बेटर आइडिया ऑन द डेली चार्ट. यस वी डू. हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था, राइट, दिस जनरल जोन, वहां से इट्स बीन एबल टू ब्रेक आउट अबव दैट लेवल, एंड मोस्ट ऑफ इट्स गेनिंग्स obviously just because of on Friday ऊपर चला गया था. We can see this is what it looks like. 200 MA 50 MA सबको तोड़ा है, and yeah, good stock overall. Next up, Titan 20 MA trail, looking good. Maybe अगर ये level hold करता है, I think it's got a good chance at possibly touching that 2700 2800 mark. बंधन बैंक हम लोग देख सकते हैं, पिछली बार एक बार बात की थी that if it's able to hold above this area, then there's a very good chance that we see some good movements possibly up till here or so. हम लोग देख सकते हैं कि 324 के आसपास का जो जोन है, एक्चुअली वहीं से वो रेजिस्टेंस लेता रहता है, एंड वी कैन सी यहाँ पे क्लोज किया है. दैट्स गुड, बट दैट्स पॉसिबली नॉट इनफ. सो अगर 320 के ऊपर मोमेंटम आता है, देन इट्स गॉट अ गुड चांस इन माय व्यू. HPL वी कैन सी 50 MA 20 MA के ऊपर है. दैट्स अ गुड साइन अगेन, एंड लेट्स सी इफ इट्स एबल टू मेंटेन दिस मोमेंटम. अगर कर पाता है, देन आई थिंक इट शुड बी एबल टू टच दीज लेवल्स. नाउ HPL इन जनरल अगर हम देखते हैं, वी कैन सी इट्स गॉट अ प्रिटी गुड हाई. मतलब प्राइस पहले काफ़ी थी, नाउ इट्स फॉलन कंसिडरेबल बिट, एंड इफ वी जस्ट वांट टू डू अ क्विक रिट्रेसमेंट वी कैन सी कि ओवरऑल 86 का लेवल है 38.2 फिब का, एंड 60 का लेवल है 23.6 फिब का. सो बेस्ड ऑन दैट मे बी दिस जोन इज वेयर इट्स रेंज इज एट. और अगर एक बार ये रेंज तोड़ता है ऊपर की साइड पे, गुड चांस वी सी इट टचिंग ट्रिपल डिजिट्स. अगर डाउनवर्ड ये तोड़ता है, then obviously it's not a very pleasant sign for bulls. Next up, Indigo. अब Indigo हम लोग ने देखा है that it's got a very weird habit. जब भी without announcing its departure, it will just start taking off, and then it will leave several passengers behind. And I don't mean this in the literal sense, I mean this in the market sense, क्योंकि उसके moves कभी कभी थोड़े choppy हो जाते हैं. You can see here it's all over the place. So Indigo, what I have seen is that if you look for the perfect setup in Indigo, it's likely not going to happen. So it's better to look for something that looks just right or risk reward align होता है दोनों. Next up, we can see Mangalam Cement 50 MA 20 MA के ऊपर है. This also looks good. I feel this does have a short as well. In general, we can see अगर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाते हैं, दिस प्रीवियस वीक कैंडल ब्रोक इट, एंड देन अभी जो रिसेंट वीक हुआ था, that has actually held and sustained that break. So that also looks good. Mirza International, this was a stock on our list last week as well. Already up around 15%, looks good. Has a good chance to do further, I would say. Breakout hai, so strong breakout hai, multi-year breakout hai. In case you're wondering, thumbnail में multi-year breakout करके मैंने जो buzzword डाला है, that is because of this stock only. E-Clerks is also here on our list. We can see यहाँ पे it's looking good overall. Higher lows भी बना रहा है, 20 MA के भी ऊपर है. It's got a good chance overall, I'd say, to reattempt those higher levels, maybe around 3000 or so.
नेक्स्ट आप जिलेट हम लोग देख सकते हैं 5203 पे 20 MA के आसपास आया है, एंड ऑन द डेली चार्ट इट्स एक्चुअली क्रॉस द लेवल दैट वी स्पोक अबाउट लास्ट वीक। हम लोग देख सकते हैं लास्ट वीक वी वर टॉकिंग अबाउट 20 MA रेजिस्टेंस एंड 50 MA रेजिस्टेंस। फिलहाल तो दोनों को तोड़ा है, दैट लुक्स फाइन। नेक्स्ट आप जीएम ब्रूअरीज वी कैन सी हियर 20 MA support है daily पे, and if I just show you the weekly, we can see it's bounced up from 50 MA and now it's holding 20 MA, so that might also be a good stock to look at. Next up GCP, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 200 MA के ऊपर आया है। इन जनरल दिस हैज बिन द प्राइस जोन फॉर इट, आई थिंक आई हैव मार्क्ड इट एज वेल, यस आई हैव। और हम लोग ने देखा कि यहीं से वो बाउंस अप हुआ था। दिस इज ऑल्सो अ लेवल दैट वी हैव स्पोकन अबाउट अ फ्यू टाइम्स इन द पास्ट। अब कहाँ पे जा सकता है? आई थिंक 870 और सो माइट बी वेयर इट्स साइट्स माइट बी हेडेड टुवर्ड्स। नेक्स्ट अप L&T फाइनेंस हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा ऊपर की ओर मूव आया है। दिस वीक वी हैव सीन सम sort of selling pressure because we've seen it sort of falling from its highs, but still overall 50 MA के ऊपर, and if it's able to hold above these levels it can show a good sign. नेक्स्ट अप Omax, ये स्टॉक मैंने काफ़ी बॉटम फिशिंग करके उठाया था because at that time real estate sector in general look good. I still have a analysis on trading view about it, आप देख सकते हो my logic behind it, and it was like a contra setup because oversold था, and this phase was a little weird because sideways ही जा रहा था, but मैं बोला ठीक है यार, अभी if I've taken it on the weekly or monthly chart I can't expect it to go up by 20% the next day, so वो हिसाब से मैंने पकड़े रखा है, and then obviously it gave good returns. Now this past week it's gone up by around 20%, so let's see अगर ये hold करता है कि नहीं। ओवरऑल 50 MA से ही ऊपर गया है। नेक्स्ट अप वीव गॉट वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दैट इट्स अबव 50 MA। ओवरऑल ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है एंड इट्स अप्रोचिंग द 200 MA लाइन। अगर 200 MA को तोड़ता है इट्स गॉट अ गुड चांस एट, आई वुड से फर्स्ट इट माइट जस्ट ऑब्वियसली ये वाला 200 MA के आसपास 70 के आसपास का रेजिस्टेंस है, देन मे बी अराउंड 86 और सो। So yeah, let's see. Very curious to hear your thoughts as well. And yeah, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.